Brought to you by Summercool. पैक कर दे समरकूल। समरकूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समरकूल लाइफ बनाए वंडरफुल। दिल्ली विधानसभा की प्रिविलेज कमेटी ने अरविंद केजरीवाल को फांसी घर मामले में, विवाद से जुड़े मामले में आज अपीयर होने के लिए समन किया था। 3 बजे अरविंद केजरीवाल को प्रिविलेज कमेटी के सामने पेश होना है, लेकिन उसके ठीक पहले विधानसभा के ठीक बाहर हंगामा शुरू है। अरविंद केजरीवाल की गाड़ी के सामने दिल्ली पुलिस का बैरिकेड इस वजह से क्योंकि विधानसभा ने नोटिफिकेशन निकालकर स्पष्ट किया था कि आज की प्रोसीडिंग में कोई भी मेंबर विधानसभा परिसर के अंदर अलाउड नहीं होगा। परमिशन डिनाई की गई थी। उसका कारण यह है कि ऐसा लग रहा था कि संभवतः लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उत्पन्न हो सकती है विधानसभा के अंदर अगर बाकी मेंबर्स को अलाउ किया जाए। अरविंद केजरीवाल ये मांग कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी ये मांग कर रही है कि ये प्रिविलेज कमेटी का जो पूरा मामला है, अपीयरेंस है उनका, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग कराई जाए। तस्वीरों में देखिए अरविंद केजरीवाल इस वक्त दिल्ली विधानसभा के परिसर में जा रहे हैं। साथ में नेता विपक्ष आतिशी हैं और उसके साथ साथ पूर्व सरकार में स्पीकर रहे रामनिवास गोयल। लाइव स्ट्रीमिंग की मांग थी। Right there in the pictures, Arvind Kejriwal reaching the Delhi Assembly in order to appear before the privilege committee in connection with the Phansi Ghar issue. And in that car, Arvind Kejriwal car is leader of opposition Atishi. Along with him is the former Speaker of the Delhi Assembly, Ram Niwas Goyal. And heavy drama right outside the Delhi Assembly complex. The reason being is that the Delhi Assembly Speaker Office had issued an order barring any member of the Assembly from entering the Vidhan Sabha complex in the national capital, fearing there could be a law and order situation or any other critical issue disruption during this particular privilege committee appearance. Now the car has been stopped right outside the main gate of the Delhi Vidhan Sabha, and the Aam Aadmi Party chief, the former Chief Minister of Delhi, Arvind Kejriwal, is still waiting for his clearance to enter. Saurabh Bhardwaj, the state president of Aam Aadmi Party, has been asked to step out of that car. Leader of opposition Atishi, former speaker of the assembly Ram Niwas Goyal, and Arvind Kejriwal are entering the main complex of the Delhi Assembly. So clearly, Aam Aadmi Party tried to create, play optics over this issue in order to galvanize this particular issue, to galvanize their cadre. But Aam Aadmi Party's demand of live streaming of the proceedings of privilege committee in connection with the Phansi Ghar controversy or row as to why Phansi Ghar was constructed during Aam Aadmi Party regime, because apparently there has been some sort of understanding that the area which was developed into Phansi Ghar Memorial was not even a Phansi Ghar. That's what the understanding has been so far. Arvind Kejriwal has to face questions along with Ram Niwas Goyal, the former Speaker of Delhi Assembly, as well as now the leader of opposition Atishi is accompanying Arvind Kejriwal. So clearly on one side, Aam Aadmi Party trying to create a political uproar over the issue, demanding live streaming of the particular proceeding. But BJP, or rather the Vidhan Sabha establishment, saying that that is not possible because it is a privilege committee proceeding.